disturbed even in the greatest, facing the greatest possible danger. तो सबसे बड़े खतरनाक परिस्थिति में भी वो परेशान नहीं होते। Krishna consciousness is so nice कृष्ण भावनामृत इतना अच्छा है that one is perfectly situated in Krishna consciousness, कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, then his condition will be like this. तो उनकी स्थिति ऐसी होगी। And once you achieve that stage, you'll forget about any other so-called profits. एक बार जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और किसी भी लाभ के पीछे आप नहीं You'll not run after any other thing. किसी भी दूसरी चीज के पीछे आप नहीं भागेंगे। Everyone is running, hankering after so much profit, money, money, money. सभी लोग भागा भागी कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए, पैसा पैसा। I've got so much money, I want to make it double, then I want to make that double. मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं उसको दुगना करना चाहता हूँ, फिर उसको Then I और want to दुगना make करना it चाहता 10 times that double. हूँ, फिर मैं उस दुगना का 10 गुना करना चाहता And हूँ, then 10 times, why 10 times? Let's make it 100 times. फिर 10 गुना क्यों 100 गुना करूँगा। Go on increasing, money, 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 more money, 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 money. बढ़ाते रहना, पैसा पैसा और पैसा। So the civilization is just increasing like this. तो ये सभ्यता इस तरह से आगे बढ़ रही है। But if we're in complete anxiety, लेकिन अगर हम पूरी तरह से चिंता में हैं, completely disturbed, पूरी तरह परेशान हैं, so what difference does it make if you have, so much money and so much material assets? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास बहुत सारी भौतिक संपत्ति हो, You have no peace of mind, आपके मन की कोई शांति नहीं होगी, complete fearful anxiety state of mind. पूरी तरह से भय और चिंता में स्थिति में रहेंगे। That means there's no happiness. इसका मतलब कोई सुख नहीं। Then what is the use of all of that? तो इन सारी चीजों का फिर लाभ क्या है? If one is Krishna conscious, Prabhupada said, then only that way he can become happy. प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो सकता है केवल तभी वो खुश हो सकता है। Devotee of the Lord in pure Krishna consciousness, he's satisfied with that consciousness only. तो भगवान के भक्त उस स्थिति में उस शुद्ध चेतना में सदैव संतुष्ट रहते हैं। They're not interested in any other type of consciousness. उन्हें किसी भी और चेतना में दिलचस्पी नहीं होती। They're not putting any demand, वो कोई किसी भी तरह का अपना मांग नहीं रखते, no hankering, no lamenting. कोई उत्कंठा नहीं, कोई शोक नहीं। Just that simple consciousness, Krishna consciousness, that is sufficient. ये सरल चेतना कृष्ण भावनामृत की चेतना ही उनके लिए पर्याप्त है। Because free from all anxiety and fear, वो सारे भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, really become peaceful. और असल में शांत हो जाते This is हैं, very pleasing. और ये बहुत ही आनंददायक होता है। If one is actually situated in Krishna consciousness, this will be the effect. अगर कोई असल में कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो ये प्रभाव उनको मिलेगा। So just see Prahlad Maharaj, तो देखिए प्रहलाद महाराज after so devastating pastime, ऐसे तबाही वाले लीला के बाद all the demigods have become so much afraid, सारे देवता बहुत भयभीत हो गए, and even his father is killed. और यहाँ तक कि उनके पिता मारे गए। Very ghastly appearance, बहुत ही भयानक रूप था, very ferocious type of incarnation, moaning, growling like a lion. बहुत ही Getting stronger. अवतार था, शेर की तरह गुजार रहे थे, अभी और So शक्तिशाली even हो in गए। spite of all of that, Prahlad, he was not at all afraid. इन सब के होने के बावजूद भी प्रहलाद की किसी तरह He की was peaceful. वो शांत थे, And therefore he was also make the Lord more peaceful as well. और साथ ही वो भगवान को भी और शांत करने लगे। Srila Prabhupada ki जय Sringadev Bhagavan ki Srila Govinda Swami Srila Gurudeva ki Samaveda Bhakta Vrinda ki. So when I first read that pastime, I thought, oh, Prabhupada, he didn't kill that snake. तो जब मैंने पहली बार ये लीला पढ़ा तो देखा मैंने प्रभुपाद ने उस सांप को मारा नहीं। So I was thinking that maybe you were right. तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है वो असल में सही The थे। sadhu is compassionate, and they think like, oh, the poor fellow is anxiety is nature. Just put him in the forest. तो साधु जब ऐसे किसी को देखा कि हाँ ये चिंता में है, उसे जंगल में छोड़ दो। But then he'll bite somebody else after that, लेकिन वो जाके बाद में किसी और को काटेगा, and then he'll have to take all reactions for all of this biting and killing people. और फिर उन्हें बाकी सारे लोगों को काटने और उनके मारने का So then it प्रतिक्रिया देना makes पड़ेगा। sense that if you kill now, then it just kills all the
the sinful reaction, तो बिल्कुल सही अर्थ बनता है, अगर उनको अभी मार दिया जाएगा तो उनका सारा पाप कर्म then you're actually doing them a favor. असल में उनका उपकार किया जा रहा है, And it's a real welfare work. और ये असल परोपकार है। So sadhus, they want to do welfare, they want to do good to the people. तो साधु लोगों के लिए परोपकार करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते So हैं, therefore everybody is protected from this disturbance. तो सभी लोग इस परेशानी से बच सकेंगे, And at the same time, that living entity is able to get rid of their sinful reaction. और साथ ही साथ वो जीवात्मा भी अपने पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं से भी मुक्त हो पाएगा। So it's a nice, more understanding of that situation. तो और भी अच्छे तरीके से कैसे उस परिस्थिति को समझ सकते हैं। यहाँ Otherwise, how you can be happy killing your father, वरना कैसे आप खुश हो सकते हैं अपने killing पिता के any मारने living पर, entities? किसी जीवात्मा के How मारने you're पर, sadhu? कैसे आप साधु Why हैं, you're showing such cruelty, such violence? क्यों ऐसी क्रूरता, ऐसी हिंसा दिखा रहे हैं आप? So we have to look at it in a more sophisticated way. तो हमें इसे और गहराई में देखने की जरूरत I है। hope you're satisfied, my friend. मुझे उम्मीद है आप संतुष्ट हैं मेरे मित्र। All right? ठीक है, Is there any other points or questions कोई tonight? अन्य प्रश्न या कोई बात कहना चाहते हैं आज की रात? Yes? Yes, Mataji? जी माता जी। Snakes and scorpions are animals. How it's possible that they get reaction, karmic reaction for their party? Snakes and scorpions are animals. And how it's possible that they get karmic reaction when they bite another living entities? माता जी सवाल पूछ रही हैं, सांप और बिच्छू जो ये जानवर है, पशु है, तो कैसे वो किसी और को काटने में उनको पाप कर्म की प्रतिक्रिया मिलती है? Everybody's a philosopher, you know what I mean? सभी यहाँ सिद्धांत हैं। I'm like simple guy, you know. I'm मैं like, एकदम सरल आदमी हूँ। okay. ठीक है। So my understanding, तो मेरी I'm समझ being है, like politician, right? Oh, that's a very nice question. अब मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। My understanding is मेरी समझ something like this. इस तरीके का है, I'm buying time, right? मैं थोड़ा समय निकाल रहा हूँ। So, but we're depending on Krishna. लेकिन हम कृष्णा के ऊपर निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। And if they get some killing, some reaction, then evidently, you know, you're burning off previous sinful activity. लेकिन अगर वो अपने पूर्व के पाप कर्मों को खत्म कर रहे हैं, अगर उनको मारा जाता है, Because previously they were also in human form. क्योंकि पूर्व में वो ही मनुष्य के शरीर में थे। So because they're getting another type of animal form, this is an extension of their previous sinful activity when they're as a human being. तो जब वो मनुष्य थे, तो ये उनके पूर्व के पाप कर्मों का ही परिणाम है कि उनको इस तरह का शरीर प्राप्त हुआ है। So some type of freedom from that type of envious activities. तो किस तरह से उनके ये ईर्ष्या द्वेषी कर्मों से उनको मुक्ति मिल सकती है? Anybody else have a nice idea about that? किसी अन्य का कोई अन्य अच्छा विचार है इसके प्रति? Otherwise it says the consciousness is fixed वरना बताया जाता है कि उनकी चेतना एक समान होती है and they're just acting according to the nature. और वो अपने स्वभाव के आधार पर कार्य कर रहे होते हैं They can't help but to act like that. और वो ऐसा इसके अलावा और दूसरा व्यवहार नहीं कर सकते। So how is it that they're getting some sinful reaction for that behavior? तो कैसे उनको अपने व्यवहार के लिए पाप कर्म का फल मिल रहा है? This is a very interesting question. ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। So sinful reaction means that you're consciously doing. तो पाप कर्म का मतलब है कि आप उसको अपनी पूर्ण चेतना के साथ कर रहे That means you had to be in previous human form हैं, यानी कि मतलब आपको पूर्व में मनुष्य जब मिला हुआ होगा to consciously make a decision to commit sinful activity. कि अपनी चेतना के साथ अपने पाप कर्म किया। Otherwise, like you say, that those animal lower life forms are just forced by their nature to act. वरना पशु अपने प्रकृति जिन्हें जो कुछ स्वभाव दिया उसके आधार पे कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। So I would tie it back to free will. तो फिर मैं उसको वापस मानना चाहूँगा उस And misuse of the free will in the human form of life. और जो आज़ादी मिली है मनुष्य जीवन में उसका गलत उपयोग करने से And then because of that misuse, one then is committing sinful activity and और is karma bandhana. उसका दुरुपयोग करने से किसी को पाप कर्म का फल मिलता है और कर्म के बंधनों में वो फंसता है। Implicated. So that forms, those lower life forms are just the reaction of previous sinful activity in the human form. तो इस तरह का शरीर प्राप्त होना मतलब पूर्व में मनुष्य के जीवन में बहुत सारा पाप कर्म का परिणाम है। So you're just eliminating
that person having maybe to take that same form again in the next life. तो हो सकता है उन व्यक्ति को बचाया जा रहा है कि ताकि दोबारा उनको वैसा शरीर न लेना पड़े. Evidently, you're finishing off some previous karmic reaction, sinful reaction. यानी कि पूर्व के जन्म के पाप कर्मों के प्रतिक्रिया को खत्म किया जा रहा है. That's the best I can do right now. अभी तक मैं ये सबसे अच्छा मैं इतना ही बता सकता हूँ. Anyone else have some understanding on that? किसी और के पास और ज़्यादा अच्छी समझ है? श्याम? No karmic? Anyone? कोई भी? Yes? Our Italian GBC will tell. इटली के जीवीसी बताएंगे. हरे कृष्ण. I think we take the example of the snake. If you find in your bed a snake, you can make... What would you do? Me? Yeah. What if you woke up and there was like some black poisonous snake in your bed? What would you do? क्या होगा अगर आप जगेंगे और आप देखेंगे आपके बिस्तर में Did that ever happen to you before? आया होगा? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? Normally, when I see a mosquito that is coming to me, I start killing them. Because what? If mosquitoes attacking him, then he just kills the mosquito. Yeah, but I'm talking about snake. I'm talking about a scorpion. मच्छर जब आते हैं मुझे काटने के लिए मैं इनको मार देता हूँ. तो मैं सांप के बारे में बात कर रहा हूँ. I was thinking about one thing, so that we take the example of a snake, but can be with people fighting against people or things, animal entities that makes bad things. We can fight. But Krishna telling Arjuna to kill, right? So that means there is bona fide authorized spiritual killing with no sinful reaction. तो प्रभु बता रहे हैं जिस सांप के बजाय हम किसी मनुष्य के लिए जो कुछ गलत कर रहा हो फिर उनको मारना. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सभी को हत्या करने के लिए कहा, यानी कि एक आध्यात्मिक तरह की हत्या जो कि प्रामाणिक है, आधिकारिक भी होती है. The problem is that some people they claim that what they're doing is religious. अब समस्या ये है कुछ लोग ये दावा करते हैं जो वो कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं. And then they're making a war and killing. और फिर वो युद्ध करके मारना शुरू कर देते हैं. So it's apparently authorized तो बाहर से देखने में लग रहा है वो सही कर रहा है. in the name of religion. धर्म के नाम पर. Right? All the worst fighting and wars in the world is over religion, isn't it? दुनिया में जितने बड़े-बड़े खराब युद्ध हो रहे हैं धर्म के नाम पर. One religion, one sect against the other. It's always going on like this. एक धर्म एक पंथ के लोग ये हमेशा ऐसा ही चलता आ रहा है. So unless you're fighting for Krishna in battle of Kurukshetra, then how is it a religious authorized religious war? अगर आप कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध में युद्ध नहीं कर रहे हो तो कैसे वो आधिकारिक है, कैसे वो कृष्ण के लिए आप युद्ध किया जा रहा है. And then it's also said that all of these wars, so many millions of people are getting killed, right? और बताया जा रहा है इन सारे युद्धों में लाखों लोग मारे जा रहे हैं. So Krishna is creating some situation where all of these persons and all of the sinful reactions are being destroyed by this killing in these wars. तो कृष्ण ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहा है जिसके माध्यम से इतने सारे पाप कर्म की प्रतिक्रिया इतने सारे लोग इस युद्ध में मारे जा रहे हैं. So then atmosphere after that become more purified. तो उसके बाद परिवेश जो है ज़्यादा शुद्ध हो जाता है. Become a little lighter, a little freer, you know. थोड़ा हल्का थोड़ा साफ हो जाता है. So always there's wars going on. Now we're going into World War III again, right? तो युद्ध हमेशा चलता है. अब हम तीसरे विश्व युद्ध के पास पहुंच रहे हैं. And many billions of people will be killed in this war. और करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं. And everything will be destroyed after this war. और इस युद्ध के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा. Everyone will be riding in the bullock carts again. और वापस सभी बैलगाड़ी में घूमने लगेंगे. If you're gonna want to make investment, invest in bullock carts. अगर आप अपना निवेश कहीं करना चाहते हैं तो बैलगाड़ी में करिए. This is my financial advice to you, you know. ये मेरी आप लोगों के लिए आर्थिक सलाह है. Yeah, start building like best quality bullock carts, you know. सबसे अच्छा बैलगाड़ी बनाने का प्रयास कीजिए. Then you'll be ahead of the curve, you know. तब आप उन सभी के बीच में सबसे आगे रहेंगे. And when everyone's walking around, you can just open up a shop and just have all bullock carts there, you know. जब सभी लोग बाहर निकलेंगे आप अपना दुकान खोलिएगा बैलगाड़ी का.
That's not a bad idea. ये बुरा विचार नहीं है। Now it's just a question of timing, right? अब सवाल बस यही कि वो समय कब आने वाला है। Because if you wait too long, everyone will get into the same business. There'll be competition, you know. अगर ज़्यादा लंबा इंतजार करेंगे सभी लोग कंपटीशन में उतर जाएंगे। Our friend was worried about the competition. जैसे हमारे दोस्त जो है वो प्रतिस्पर्धा की चिंता कर रहे थे। So this is some financial advice for तो ये you, मेरी आर्थिक सलाह है आपको। free of charge. इसके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। Just looking into the future. कि हम भविष्य में थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं। That is analysis. ये आकलन है। Are you ready for that? क्या Are आप you लोग ready तैयार हैं for इसके the लिए? war? क्या आप Are you ready for the world war? क्या आप विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं? Maybe you should start practice riding on bullock cart. आपको अभ्यास करना सीखना चाहिए बैलगाड़ी चलाना। Because if you're not used to that, you know, it takes like a little bit to get used to that, you know. क्योंकि उसको चलाने में थोड़ा सीखने में समय लगता है। It's not as comfortable, ये इतना आरामदायक नहीं होता है। not as good suspension, you know. उसके जो You can suspension feel अच्छे like नहीं होते। every rock, you know, it's like a little rough, you know. हर एक पत्थर रास्ते में जो आएंगे वो आपको महसूस होगा थोड़ा। Maybe before everything's destroyed, you can get bullock cart that has like nice suspension, you know. तो सबसे पहले सब कुछ तबाह हो जाए उससे पहले आप अच्छे सस्पेंशन वाले बैलगाड़ी बना लीजिए। Right? Some shock absorbers, you know. झटके झेल सके। That's not a bad idea. ये असल में गलत है। Anyway, we'll discuss this later, you इसके know. बारे में हम बाद में बात करेंगे। So what do you think? तो आप क्या सोचते हैं? No, the point of my doubt was like that you can maybe like the person who you are fighting against is have really bad intention, but I think you Like a Nazi, like a Nazi, right? Like a Or a George, fascist. लड़ाई कर रहे हैं उनकी बहुत खराब मानसिकता बहुत खराब लोग हैं बुरी मानसिकता गुर्दे बता जैसे नाज़ी लोग। But I think if you are fighting because maybe they touch something in your false ego, okay, like Then just kill them, you know. Then they don't have to bother your false ego, you know. रोज मार डालने की जरूरत ताकि आपके मिथ्या अहंकार को ठेस ना पहुंचा। I better be careful because I'm joking and people will be like, Krishna said to Maharaj, just kill everybody who affects your false ego. You know? मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मतलब लोग कहेंगे कि कृष्णा महाराज के माध्यम से उन्हें बताया हमें जो भी लोग हमारे मिथ्या अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं हमें उनको मार देना चाहिए। Don't be a fanatic, you know. तो ऐसे मत पालन कीजिएगा। They offended me. मुझे Stop बुरा praying for Lord मेरे पर Narasimha क्या Chaturdashi to come down and, you know, cut off their head, you know. तो निश्चित से प्रार्थना करें कि वो यहाँ अवतार ले और उनका सर काट दे। Anyone who bothers her in her drama, trauma, जो भी उनके नाटक और उनके सदमे में उनको परेशान करता है she'll pray to Lord Narasimha Chaturdashi, you know. निश्चित से प्रार्थना करें। You cannot use that in that way. उस तरीके से उसका Lord will इस्तेमाल not नहीं कर come. सकते हैं भगवान वैसे नहीं आएंगे। If he does, he might kill you, you know, हो सकता है आएंगे तो वो आपको ही मार just for asking. Sometimes it says the snake is just biting itself, you know, कभी कैसे कहा जाता है सांप जो है खुद को ही काट लेता है because they become very, very hot. क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाते हैं Because they're so angry, they're so envious. क्योंकि उनको इतना गुस्सा आता है वो बहुत द्वेषी होते हैं। So sometimes they're just self-destructive. They destroy themselves by their own anger and enviousness. तो वो खुद के गुस्से क्रोध से और खुद के द्वेष से खुद को ही विनाश कर देते हैं। You have a question? Mataji, another question while you're pondering this idea, while you're thinking about this? जब तक आप इस उत्तर के बारे में सोच रहे हो तब तक माता जी के पास एक सवाल है। Hare Krishna. Actually, you just given an analogy of like if we in a situation where we have to like defend or to kill something like a snake. Yeah. Like we are sleeping and we suddenly saw a snake and we have to attain some action. So in that case, I'm saying, should we feel guilty about it, or maybe we like it is a right to defend, to kill someone else, to defend ourselves?
If you're threatened, Life-threatened, yes, life-threatened situation. if you're threatened to be killed, Yes. then you have God-given right to protect yourself and your family. So I can do the action that I want, or the situation created, and try to do by me. तो To do that action Or by me. you can hire an assassin. That's easier. You don't have to get your hands dirty, you know. तो माता जी पूछ रहे हैं, अगर हमारे प्रति कोई बुरा करता है और हम उसको हमारे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, हमें मारने का प्रयास करता है, उसको मारने के जैसे आपने उदाहरण दिया, तो हमें उस बात का हमें क्या बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो सही कार्य हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो गुरुदेव बता रहे हैं सही अपने आप को बचाने के लिए जब आप इस तरह का करने का प्रयास करते हैं, या फिर आप किसी को रख सकते हैं उनको मारने के लिए ताकि आपके हाथ आपको गंदे ना करने पड़े। Then that makes because there'll be a lot of weapons and no work, so people will probably give you a nice price, you know. क्योंकि बहुत सारे हथियार होंगे और काम नहीं होगा लोगों के पास, तो अच्छे दाम में आपको मिल सकते हैं। Then you have to buy one of these bullock carts, you know, and get a little money, you know. बैलगाड़ी खरीदनी पड़ेगी। With suspension, it's a little more costly. और जब वो सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा महंगा होगा। And what if I just leave that people aside? Maybe I leave that animal or whatever the person. It can be a person who is trying to harm me, and I'm just leaving that without defending it. No, you have the right. If someone is threatening to kill you, you have the right to protect yourself. God-given right to protect yourself. तो क्या हम उनको छोड़ सकते हैं जो हमें मारने का प्रयास करें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए? तो मुझे बता रहे हैं भगवान ने सभी को अपना अधिकार दिया है कि स्वयं की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। Or your family. या अपने परिवार के लिए। If they're threatening to kill, then you have the right to kill them. अगर वो मारने का प्रयास करें तो आपका अधिकार है उनको मारना। And if they change later on, then they'll be dead. It doesn't matter. कह रहे हैं बाद में अगर वो लोग बदल जाते तो बता रहे हैं कि वो मर जाएंगे, उसके बाद क्या परिवर्तन? It's too late, you know. They have a bullet hole in their head. They already changed. You know, they changed the body, you know. तो वो मर चुके हैं, उनके शरीर खत्म हो चुका है, जो सर में एक गोली घुस चुकी है, तो अब वो अगले शरीर में जा चुके हैं वो। And hopefully they get a better body where they're not threatening to kill people, you know. और उम्मीद है उनको अब दूसरा अच्छा शरीर मिला होगा जहाँ दूसरे लोगों को धमका नहीं रहे होंगे मारने के लिए। Okay, if someone committed if someone attend. Do you have somebody in mind here? आपके मन में है कोई यहाँ पे? You have somebody in mind, you ऐसा know. लग रहा है आपके मन में कोई है। She's contemplating, you know. सोच रही है उसके विचार कर रही है। She's building her case, you know. अपना केस तैयार कर रही है। We should warn these people. Be careful, come you in know. my चेतावनी दे देना चाहिए। Don't give her a gun, you know. तो बंदूक मत दीजिएगा। No, like some situation came into my life, so I try to instead of trying to harm other, like who trying to I harm myself. I do it to me. I cannot, like, it's happened many times. If we continue to associate with persons who are harming us, then Not physically. Listen. If we associate with people who are harming us, we are participating Yes. in agreeing to harm ourselves. तो माता जी By not doing anything, we're agreeing to allow to harm us, so we're actually harming ourselves by agreeing to that. तो माता जी कह रही हैं कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाता है हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोग ऐसे संघ हैं, और अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उनके साथ सहमत हो रहे हैं, उनके साथ भागीदारी निभा रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। Because we're allowing it to happen. That means we might as well just do it to yourself. You're allowing yourself to be punished, you're also to blame. तो आप अपने साथ ही होने की अनुमति दे रहे हैं तो आपको भी उसका दोष मिलेगा। This is also my karmic result, as I can assume it. So whatever I'm doing it, or whatever I have done, this kind of activity, that means it is also, can I consider it as my karmic result, something I did like later like previous birth, and then I'm suffering here.
it's better just to surrender to Krishna. माता जी कह रहे हैं कि हो सकता है ये मेरे पूर्व कर्मों का कारण है कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, ऐसे मेरे साथ परिस्थिति उत्पन्न हुई है। तो गुरुदेव बता रहे ज़्यादा बेहतर है आप कृष्ण को शरणागत करें। Because then you can get free from the punishment of the suffering of your sinful reactions. That's a smarter way to deal with getting free from the suffering of sinful reactions. तो ये बुद्धिमानी है, अगर आप अपने पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कृष्ण को शरणागत करना। Yeah, actually, because I sometimes I don't find anything that I've done wrong, but still I feel I'm suffering without any reason. Like that's from previous lifetime, previous life. तो माता जी कह रही कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे दंड मिल रहा है या मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये पूर्व जन्मों के कर्मों का कारण है। So whatever suffering we're getting in this life is because of past sinful activity from previous lives. तो जो भी हमें दुख इस जन्म में मिल रहा है, ये हम पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए उसका हमें परिणाम मिल रहा है। And then whatever choices we're making in this life, that will create in your next life what will be your karmic reaction. और जो इस जीवन में हम फैसला ले रहे हैं वर्तमान में, ये निर्धारित करेगा हमारा भविष्य का जीवन कैसा होगा। Can it be a human life? That I don't know in this life. It's risky. तो माता जी कहते हैं मुझे पता नहीं वो मनुष्य जन्म मुझे मिलेगा नहीं। गुरुदेव बता रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा खतरा है। Because if we have a human life and we don't use it for the purpose of becoming God conscious, then we may lose that form. We may not get human life in next life. क्योंकि अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है और अगर हम उसका इस्तेमाल भगवान की भक्ति करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमें ये अगला मौका नहीं मिलेगा। So it's a risky. तो ये बहुत ही खतरनाक है। There's no guarantee we're going to take another human birth. तो कोई गारंटी नहीं है हमें दोबारा मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होगा। If we're committing all sinful activities and we're not taking advantage of human form of life, अगर हम केवल पाप कर्म कर रहे हैं और मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठा रहे हैं, then it says we may lose that. तो ऐसा कहते हैं हम हो सकता है हम उसको खो देंगे। So if we understand the opportunity and we understand the risk if we don't take the opportunity, then maybe that will make us more sober, more serious. अगर हम समझ पाएंगे कि ऐसा मौका मिला है और ये इसको खोने पे कितना बड़ा खतरा है, तब हम ज़्यादा धीर हो पाएंगे अपने मौके का लाभ उठाने। Because it says the human form is a rarely achieved birth. क्योंकि बताया जाता है मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ से प्राप्ति होता है। And only in the human form can you purify and elevate your consciousness to understand about transcendental topic. और केवल मनुष्य जीवन में ही आप अपनी चेतना को उन्नत बना सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं दिव्य विषयों को समझने के लिए। All the other forms you cannot transcend that material or bodily form. अलग रूपों में आप अपने भौतिक शारीरिक स्तर से अपने आप को शुद्ध नहीं बना सकते हैं। And come to like soul platform. और आत्मा के स्तर पर नहीं आ सकते। So only in human form can we purify and elevate the consciousness to realize the soul topic. तो मनुष्य के रूप में ही अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं कि हम आत्मा के विषयों को समझ सकें। And it's said that the human form of life is only meant for that. और बताया जाता है मनुष्य जीवन इसी चीज के लिए बना है। So if we don't use our human form of life for that purpose, तो अगर हम अपना मनुष्य जीवन उस उद्देश्य के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं and instead we squander the opportunity और उसके बजाय हम इस मौके को खो देते हैं and engage in all type of sinful, irresponsible activity, और सभी तरह के पाप कर्म या गैर जिम्मेदाराना कार्य में लगते हैं, if we continue doing like that, और अगर हम इस तरह से करते रहना जारी रखेंगे, then we're jeopardizing getting a human form in the next life. तो हम बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं कि हमें दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। But if you ask most people who's worrying about the next life, लेकिन ज़्यादातर लोगों से पूछेगा कौन अपने आगे के जन्म के बारे में चिंता भी कर रहा है। everybody worried about this life, सभी लोग इस जन्म के बारे में चिंता करते हैं। right? This mother, this father, this family, this body, this situation. ये माता, ये पिता, ये परिवार, ये शरीर, ये परिस्थिति। We've had hundreds, thousands of mothers and fathers. हजारों, सैकड़ों हमारे माता पिता हो चुके हैं। What, now all of a sudden this mother and father is like some extra special thing? और अचानक से ये माता पिता कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेष चीज हो चुके हैं। That's a Maya. ये है माया, Big time Maya. बहुत बड़ी माया। So I'm trapped in this. So I'm trapped in this Maya. And so you want to get out of it. तो मैं इस माया में फंसी हुई हूँ। मुझे बताया जब तक आप इससे बाहर निकलना नहीं चाहते, Are you enjoying Maya? कि आपको माया में मजा आ रहा है? No? You're not having fun? आपको मजा नहीं आ रहा?
You're getting a nice taste of what is Maya? आपको माया का बहुत अच्छा स्वाद मिल रहा है? Are you getting like some nice heavy lashes? या आपको बहुत भारी मार मिल रही है? Are you feeling it? या आपको महसूस हो रहा है? Do you feel some heavy lashes from Maya, some punishment from Maya? आपको ऐसा लग रहा है माया आपको बहुत दंड दे रही है, आपको भारी मार मार रही है? It's not nice, ये right? अच्छा नहीं है ना? So Krishna says, if you surrender to me, I'll free you from Maya. तो कृष्ण बताते हैं, अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपकी माया से आपको मुक्त कर दूंगा। Krishna will order Maya to release you. कृष्णा माया को आदेश देंगे आपको छोड़ने के लिए। And whatever sinful reaction that we have there that's causing us suffering and anxiety, Krishna says, I'll free you from that. और कृष्ण बताते हैं जो भी पाप करने की प्रतिक्रिया जिसकी वजह से आपको दुख या चिंताएं आ रही है, मैं उससे आपको मुक्त कर दूंगा। If you will just agree to do the Sanatan Dharma. अगर आप ये सनातन धर्म करने के लिए राजी होंगे। Everybody worried about Dharma, सभी लोग धर्म की चिंता कर रहे but they're not worried about the Sanatan हैं, Dharma. लेकिन सनातन धर्म की चिंता नहीं कर रहे। Sanatan Dharma is the real Dharma. सनातन धर्म असल धर्म है। Real Dharma means bhakti. असल धर्म का मतलब है भक्ति, Other so-called Dharma is a Kaitava Dharma. और बाकी धर्म कर्तव्य धर्म है, It's a man-made Dharma. मानव निर्मित धर्म है। So that will not help you spiritually. तो वो आपका आध्यात्मिक रूप से बदल It नहीं certainly पाएगा। will not free you from the suffering of sinful reaction. और निश्चित ही आपके पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं से आपको मुक्त नहीं कर पाएगा। Only Krishna has the power to control Maya केवल कृष्ण के पास शक्ति है माया को नियंत्रण करने की, and to change your karma or to free you from your karmic reaction. आपके कर्म को बदलने के लिए, आपके कर्म के परिस्थितियों से आपको मुक्त करने के लिए। Demigods cannot do that. देवता ये नहीं कर सकते, No other man can do like that. कोई भी मनुष्य No नहीं कर सकता, psychologist, no psychiatrist, कोई मनोचिकित्सक नहीं, not your mommy and your daddy and ना your family. माता पिता परिवार, Nobody can change and free you from your karma. कोई भी आपको अपने कर्मों को बदल Only नहीं सकता, Krishna. केवल कृष्ण। He has the, administrative access, right? He has the final access, the control of everything. तो वो सबसे अंतिम निर्णय करते हैं, उनके पास सबसे अंतिम निर्णय करने का विकल्प है। Everyone has some partial power control, but सभी के not the पास ultimate power control. कुछ आंशिक शक्ति है, नियंत्रण है, लेकिन पूर्ण शक्ति या नियंत्रण नहीं है। Should I consider all this suffering as my lesson to build myself as stronger as I can? Whatever suffering I had in my life, should I consider that as my lesson, life lesson, to build myself as concrete as I can? So basically, how much suffering can you tolerate? Yes. पूछ रही है In कि future, also what I had in Then my there'll be more suffering, then you'll just be endlessly tolerating your suffering. बाबूजी कह रहे हैं कि आप मुझे अपने It's not दुखों a से real conclusion, it's not a real solution. मुझे अपने दुखों से सीखना चाहिए कि मुझे जो दुख मिला और मुझे अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत बनाना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं तब तो और ज़्यादा भारी दुख मिलेंगे और इस तरह से आप निरंतर अपने आप बस सहन शक्ति करने में लगे रहेंगे। ये समाधान नहीं हुआ, ये अंतिम निष्कर्ष पे नहीं जा रहे हैं आप। The real strength and intelligence means how do I get out of having to take this sinful punishment or reaction. असल बुद्धिमानी है, चतुराई है कि कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ इस दंड से, दुखों से, ना कि मैं कैसे इसको और सहन कर सकूँ। So we're getting heavy lashes from Maya, heavy reaction, right? That's forcing us to surrender to Krishna. तो माया से हमें जो भारी दंड मिल रहा है, प्रतिक्रिया मिल रही है, ये असल में हम मजबूर कर रहा है कृष्ण को शरणागत करने के लिए। Because otherwise it'll be so heavy that no amount of tolerance that you can tolerate it. वरना ये इतना भारी होगा कि किसी भी तरह का सहन शक्ति नहीं होगी आपके पास जो आप सहन कर। Just when you think you're tolerating, then Maya will give you more. जैसे ही आप सोचेंगे आप सहन कर रहे हैं, तब माया आपको और ज़्यादा कुछ देगी। And then you think, okay, I'm tolerating that, then she'll give you more. फिर आप सोचेंगे आप अपने ये सहन करें, तब माया आपको और ज़्यादा देगी। So just, if you're getting beaten by a stick, you just, okay, I can tolerate that. Okay, well, here's some more beating by the stick. आपको डंडे से मारा जा रहा है कि मैं इसको सहन करूँ, आपको और ज़्यादा डंडे से मारा जाएगा। Then you have to make a mental adjustment that the suffering is the new happiness. अब आपको अपने मानसिक व्यवस्था मन को व्यवस्थित करना होगा कि ये जो दुख है ये असल नया सुख You है। just make some t-shirt, suffering is the new happiness. टी-शर्ट बनवाना पड़ेगा, दुख जो है नया सुख है। And every time you're suffering, just say, oh, I'm getting so much pleasure today, और जब भी आपको दुख मिले आप कहेंगे आज मुझे बहुत This आनंद is आया, fantastic, बहुत बढ़िया है, I wish more, give me more. और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा This चाहिए। is so happy, this is so nice. ये बहुत अच्छा है, बहुत सुख दे रहा है।
So real intelligence means, okay, how do you get out of this whole cycle? तो असल बुद्धिमानी है कैसे मैं इस चक्र से बाहर निकल सकूं। We're not meant to be like this. हम ऐसे रहने के लिए बने नहीं हैं And there's no relief to it. और इससे कोई राहत भी नहीं है। Just like Arjuna, he tried everything जैसे अर्जुन ने सारा प्रयास किया to adjust his situation. अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए। He exhausted everything he had. उनके पास जितना कुछ था सब कुछ करके वो थक गए। And only it was becoming more perplexing and more complex and more disturbing. There was like no end to it. और ज़्यादा उलझन और जटिलता होती जा रही थी, इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा था। And when he finally understood that, he said, okay, this is never going to work. और जब अंत में वो समझ पाए ये कभी काम नहीं आने वाला। Our so-called solution is just the cause of our future suffering condition. तो जो मैं समाधान निकाल रहा हूँ यही मेरे भविष्य के दुखों का कारण बनने वाला है। So it doesn't solve anything. ये कुछ समाधान नहीं कर रहा। So when he finally caught that point, he said, I better just surrender to तो Krishna. जब अंत में वो ये बात समझ पाए उन्होंने सोचा कि मुझे कृष्ण को शरणागत करना होगा। So Maya is doing a thankless task. तो माया ये बिना धन्यवाद के कार्य करती है। Because when you're getting beaten by Maya, nobody likes Maya. जब माया से कोई मार खा रहा होता है किसी को माया पसंद नहीं होती। But she's forcing us to surrender to Krishna. लेकिन वो हमें मजबूर कर रही है कृष्ण को शरणागत करने के लिए। So Krishna and Krishna devotee trying to attract us towards them to that way of life and that state of consciousness. तो कृष्णा के भक्त हमें आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं वैसे जीवन में, वैसे जीवन स्तर में, उसी चेतना में। So Krishna devotees, the process of bhakti is very attractive. तो कृष्णा के भक्त ये भक्ति की प्रक्रिया बहुत ही आकर्षक है। And so Krishna is trying to attract us, but because we're in ignorance, we're not in a nice consciousness, we have envious, challenging attitude, then only then you have to get beaten. तो कृष्णा में आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम अच्छी चेतना में नहीं है, हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हम द्वेषी हो रहे हैं, तो हमें फिर मार खाने की जरूरत है। It says if you're very intelligent, you can learn by hearing. कहते हैं अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं तो आप सुन के सीख सकते हैं। So if we're not very intelligent learning by hearing, then it says that you have to learn by a stick. अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं, सुनकर सीख नहीं पा रहे तो हमें डंडे से सीखना होगा। So unfortunately, most of us had to learn by stick. लेकिन दुर्भाग्य से हम में से ज़्यादा लोगों को डंडे से सीखना होगा। So when we're sick of learning that way, then we'll think maybe I should learn how to hear, get some better advice. तो आप जब थक जाएंगे डंडे से सीखते हुए तो हम सोचेंगे कि कैसे मैं बेहतर सलाह सुन के समझ सकता Because हूँ, our way not really working. क्योंकि हमारा तरीका काम नहीं कर रहा। You have to admit defeat. आपको अपनी हार स्वीकार करनी है। Maya is defeating the greatest personality. माया महान व्यक्तियों को हरा Who देती are we? What are we? है। We're हम कौन हैं? nothing. हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। Maya is bewildering Lord Brahma. माया ब्रह्मा को भी भ्रमित कर रही है। So how we're going to overcome Maya? तो हम कैसे माया से बाहर निकलेंगे? Sometimes I ask the devotee, how's it going? So I'm fighting against Maya. जिस वक्त से पूछता हूँ कैसा चल रहा है, कहते हैं हम माया से युद्ध कर रहे हैं। How are you going to fight against Maya? माया से क्या आप लड़ाई Maya करेंगे? 1 second can make you fall down. माया 1 सेकंड में आपको पतन करा देगी। There's no fighting against Maya. Krishna says it's mama Maya, it's my Maya. माया के खिलाफ कोई युद्ध नहीं। कृष्ण कह रहे हैं मम माया, मेरी माया है। Krishna says if you surrender to me, I'll control that mama Maya. कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे मैं उस मम माया को नियंत्रित करूंगा। I'm trying to control my mind and my senses. तो मैं अपने मन और इंद्रिय को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। Right? How are you going to control your mind and senses? कैसे आप अपने मन और इंद्रिय को आप नियंत्रित It कर says पाएंगे? without surrender to Hrishikesh Krishna, there is no control of mind and कहते senses. हैं ऋषिकेश को शरणागत किए बिना मन और इंद्रिय का नियंत्रण संभव नहीं है। You can try, आप प्रयास कर सकते but हैं you'll be forced लेकिन आप मजबूर होंगे because Maya knows they're not surrendered to Krishna. क्योंकि माया को पता है कृष्ण को शरणागत नहीं है। So she will force you to commit sinful activity, and then you have to get the reaction for तो that. वो आपको मजबूर करेगी पाप करने के लिए और फिर आप उस पाप का फल भोगने के लिए भी मजबूर होना। That's why I said little bit of pleasure, then unlimited suffering. इसलिए कहते हैं थोड़ा सा सुख और असीमित दुख मिलेगा। Few minutes of pleasure, then unlimited suffering comes. थोड़े समय का सुख और असीमित दुख मिलेगा। That's a Maya. ये है माया। So heavy duty price for a little bit of pleasure. बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा थोड़े से सुख के लिए। So this is our foolishness. ये हमारी मूर्खता है। It's like the, what is it, like the camel is chewing the thorns. जैसे बताया जाता है जो ऊंट कांटे को चबाते हैं।
And when they're chewing the thorns, the camel, right, they're cutting their own tongue. तो जब ऊँट कांटे को चबाता है तो वो खुद की जीभ को काट रहा होता है And then they're tasting their own blood and they're saying, oh, this is so tasty. और खुद के खून को वो स्वाद दे रहे होते हैं और कहते हैं वाह बहुत स्वादिष्ट है ये। It's such a low consciousness. ऐसे निम्न चेतना वाला जानवर है। The suffering is the new happiness. ये दुख जो है ये नया सुख है। Or the animals being led to the slaughter. या पशुओं को जब कसाई कत्ल खाने में लाइन में लगाया जाता है, Is in the line to be slaughtered. जो उनको कतार में लगाया जाता है उनको काटने के लिए, And they're just thinking to have sex with the animal in front of them. और वो सोच रहे हैं आगे वाले जो जानवर है उसके साथ कैसे मैं यौन संबंध You're बना in सकता the way to get slaughtered, हूं। वो रास्ते में है कटने and के all लिए, you can think about is having sex in at the moment. और वो यही चीज सोच पा रहा है कि कैसे मैं यौन संबंध कर It's सकता हूं। complete madness, ये है पागलपन, animalistic consciousness. ये है पशु की चेतना। Cannot understand above what you're going to slaughter. You're killing your own soul. वो आगे की सोच नहीं पाता है, उसके वो कतार में है, उसकी And आत्मा we're की so हत्या होने वाली है। mad. We're like, so what? और हम इतने पागल हैं तो कहते हैं तो क्या, Right? Like our professor, right? So what? जैसे हमारे ये Killing प्रोफेसर own हैं, soul. क्या फर्क पड़ता है, अपनी आत्मा को मारो। Nice. Going for slaughter. How can I have sex like going for slaughter? कतार में जा रहे हैं और कैसे मैं यौन संग का आनंद ले सकता हूँ। He कटते didn't हुए get रास्ते। enough slaps before, मैंने right? इनको पर्याप्त थप्पड़ नहीं मिला नहीं, So now it's going to be 10 times worse. तो अब 10 गुना ज्यादा बुरा होगा। And still he's signing up for और it. फिर भी वो उसके हस्ताक्षर कर Such a देता है, madman. ऐसा पागल आदमी। And he thinks he's a big jnani. और ये सोचते हैं बहुत बड़े ज्ञानी है। Is it helping? क्या आपकी मदद हुई थोड़ी? Yeah, Yeah? at some extent, yeah, it did. Good. बहुत बढ़िया। Because you're trying to be sincere, you're trying to understand. So Krishna conscious philosophy, it's very convincing. It's तो scientific आप actually. एक होने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो ये कृष्ण भावनामृत विज्ञान बहुत ही वैज्ञानिक विधि है जो आपको आश्वस्त कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। Nobody understands about the karma. कोई भी कर्म के बारे में समझ नहीं सकता है, This is problem. यही समस्या है। Everyone is trying to deal with the karma, सभी कर्म से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, especially the karma pala, which is the suffering and anxiety. विशेष करके ये कर्मों के फल जो चिंता और दुखों के रूप में आते हैं। But most people, they don't know why am I in suffering, anxiety, why am I in this condition. लेकिन ज्यादा लोग ये नहीं सोच पाते क्यों मैं दुख में हूँ, चिंता में, ऐसी परिस्थिति क्यों है मेरे Like साथ। you were saying, I'm trying to be a good person, जैसे आप बता रहे थे कि मैं अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा हूँ, right? But why so much suffering? लेकिन क्यों इतना दुख आ रहा है? Like especially if you're a good person, और विशेष करके जब आप अच्छे व्यक्ति हैं, but you're suffering like anything, लेकिन आप पूरी तरह दुख भोग रहे हैं, that's very ये bewildering बहुत भ्रमित करता है if you don't understand laws of karma. कि अगर आप कर्म के नियम को नहीं समझते हैं, So if you don't understand about reincarnation, तो अगर आप पुनर्जन्म के बारे में नहीं पता है आपको, otherwise they say you see like a baby is suffering when they're born, right? They're disease, condition, suffering. It's like what kind of God will do this to innocent baby like this, right? कई बार लोग कहते हैं छोटा बच्चा जब बहुत बड़ी बीमारी में होता है तो लोग कहते हैं कैसा भगवान है जो नादान बच्चे को ऐसे दुख में रखा है, Because they don't understand what did this living entity do in previous life, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उस जीव ने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, that they're getting such a painful, sinful reaction. उनको ऐसा दर्दनाक पाप कर्म का फल मिल रहा So instead of understanding that and putting responsibility on that living entity, because it's a baby, we say, oh, what kind of God will do like this? है। और इस बात को समझने के बजाय उसको उन सारे पूर्व जन्म के कर्मों का जिम्मेदार ठहराने के बजाय कहते हैं वो कैसे भगवान है, एक That's बच्चे why को so many कष्ट हो रहा है। people, because of misunderstanding, they're blaming God, they're angry at God. इसलिए लोग गलत फहमी के कारण भगवान को दोष देते हैं, भगवान के प्रति गुस्सा होते हैं, That's why they become atheistic और इसीलिए लोग नास्तिक बन जाते or impersonalistic, हैं या मायावादी बन जाते हैं, because they don't understand it, how that science is working. क्योंकि वो जानते नहीं ये विज्ञान काम कैसे कर रहा है। And I didn't understand it previously myself. और मैं भी खुद पहले इसको नहीं समझता था, I didn't know about all of this reincarnation and karma, laws of karma. I just learned when I came to
the Vedic teachings. तो मुझे पुनर्जन्म कर्म के नियम के बारे में मुझे नहीं पता था. मैं खुद जब वैदिक संस्कृति शिक्षा में आया तो मैं ये सब चीज़ों को सीख पाया. And it makes perfect sense. It's logical and it's scientific. और ये इसका बहुत तर्कपूर्ण अर्थ बनता है और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है. All I remember is I kept going to the church, in the Christian church, मुझे and इतना I ही was याद है. praying to Jesus, why am I being punished? Why am I suffering like this? जब मैं गिरजाघर में जाता था मैं ईसा मसीह से प्रार्थना करता था, क्यों मैं इतने दुख में हूँ, क्यों मैं इस तरह का दुख भोग रहा हूँ, Why am I getting so many heavy reactions like this? क्यों मुझे इतना भारी दंड मिल रहा है, This is not this. Why is it like that? ऐसा क्यों है. Then I must be doing something wrong. इसका मतलब अवश्य मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. Right? If we're getting punished, if we're honest, you have to say, okay, I must have done something wrong अगर आपको somehow, दंड मिल रहा somewhere. है तो आप अगर ईमानदार है तो कहेंगे कि हाँ अवश्य मैंने कहीं पे कुछ तो गलती की है. But at that point, I don't know about reincarnation. I don't know about laws of karma. लेकिन उस समय मुझे पुनर्जन्म के बारे में, कर्म के नियम के बारे में ज्ञान नहीं था. But I could understand somehow God is He's punishing me, teaching me some lesson. लेकिन मैं समझ पाया भगवान मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे कुछ पाठ सिखा रहे हैं. So then I started trying to think, how can I get out of this suffering condition? तो फिर मैं ये सोचने लगा कैसे मैं इस दुखों से बाहर निकल सकता हूँ. Because if you're just suffering and anxiety, there's no peace, there's no happiness. क्योंकि अगर आप पूरे दुख में हैं, चिंता में हैं, यानी कि कोई शांति नहीं है, वहाँ कोई सुख नहीं है. And you're looking around, people they look happy and everybody's enjoying. I wasn't enjoying. और आसपास देखते हैं लोग खुश हैं, आनंद भोग कर रहे हैं, मैं खुश नहीं, मैं आनंद में नहीं हूँ. That was very bewildering. Why everybody looks happy? मुझे बहुत भ्रमित करने वाला था ये, क्यों सभी लोग खुश दिख रहे हैं. Why am I the only one suffering here? क्या मैं ही यहाँ पे हूँ जो जिसको दुख इतने मिल रहे Am हैं. I really that bad of a person? क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ. But everybody's suffering, but they just can't realize it. They can't feel it. They can't perceive it. तो सभी लोग दुख भोग रहे हैं लेकिन वो उसको महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते. But if we're a little bit conscious, लेकिन अगर we'll be हमारी able to perceive it. अगर हमारी चेतना थोड़ी भी होगी तो हम उसको महसूस कर पाएंगे. We'll be able to feel it. We'll be sensitive enough to feel that anxiety and fear, suffering condition. तो हम इतना इन सारे दुखों को, चिंताओं को अनुभव कर पाएंगे. Otherwise, if we're like animal, they cannot perceive that. वरना जो पशु हैं, पशु अपनी दुखों को अनुभव नहीं कर पाते. It says like a hog, right, is living such a hellish life. They think, oh, I'm having fun. जैसे सुअर है, वो नरक जैसा जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन वो सोचता है मुझे बहुत मजा आ रहा I है. get so much nice food stuff is there. बहुत सारे खाने की चीजें हैं मेरे पास. You can have sex unlimitedly, even with your own mother and daughter. और जितना चाहे यौन संबंध कर सकते हैं असीमित रूप से अपनी माता से, अपनी बहनों Roll से. around in the mud. और कीचड़ में उलट पुलट सकते हैं. They think this is fantastic. वो सोचते हैं ये बहुत मजेदार काम है. But it's a hog life, लेकिन right? ये है सुअर का जीवन. Sometimes I will see in India when you know, like what a real dog's like on the street. जब मैंने भारत में देखा पहली बार कि रास्ते के कुत्ते कैसे होते हैं. We just saw like these fancy dogs, you know. हमने केवल जो है ये सुंदर कुत्ते देखे हैं. Right, the owners running around picking up the stool after them, like this type of stuff, you know. हमने ऐसे कुत्ते देखे हैं जब मालिक के पीछे उनके जो है विष्टा उठा रहे होते हैं. Yeah, they have a nice dress on and a nice suit. They're picking up the stool from the dog, you know. वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट लगा के जाते हैं और वो जो है कुत्ते का मल उठा रहे होते हैं. The modern civilized man and woman, right? जो आधुनिक सभ्य महिला और पुरुष ऐसे करते हैं. Then when I came to India and saw an Indian dog, I was like, wow, जब मैं भारत आया मैंने भारतीय कुत्ते को देखा, मैंने कहा वाह, what a tough life these dogs have, you know. इन कुत्तों का जीवन क्या कठिन होता है. This is, now I understand doggy dog life, right? अब मुझे समझ पाया कुत्तों का जीवन क्या होता है. And I would see them fighting, like the whole neighborhood would watch this fight of these dogs, right? मैंने देखा जब कुत्ते लड़ाई कर रहे होते हैं तो आस पड़ोस के सारे लोग जमा हो जाते हैं कुत्तों को लड़ाई करते And I थे. remember like this is so disturbing, you know. मुझे याद आ रहा था कि वो इतना They're परेशान like करने वाले really going at it, you know. बिल्कुल लगे हुए हैं दूसरे के पीछे. So I said, okay, that's a dog life, you हम know. समझ ये है कुत्ते का जीवन. Not like this fancy dog in Hollywood, you know. जैसे हॉलीवुड में जो ये सुंदर कुत्ते होते हैं उनके जैसा. Even the dogs are puffed up, you यहाँ know. तक कुत्ता भी अहंकार में होता है. They're walking like. It's unbelievable. ये अविश्वसनीय. How does a dog get puffed up, you know? कुत्ते के अंदर कैसे अहंकार है? But they know, like, you know, or some big tough dog is like, yeah. बड़ा तगड़ा कुत्ता होता है. They like got an attitude, you know what I mean? एटीट्यूड होता है.
So, yeah, then you see the dogs and they're rolling and they're playing and they're having fun, right? They look like they're having fun, right? तो कुत्ते जो है खेल रहे होते हैं, उलट पुलट हो रहे होते हैं और सोचते हैं उनको बहुत मजा आ रहा है. So are they aware of karmic sinful reaction? तो क्या उनको कर्मिक पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं के बारे में पता है? Are they trying to solve that problem? क्या वो समस्या का समाधान करने का प्रयास करते Are हैं? they perceiving their suffering condition? क्या वो अपने दुखों को महसूस कर पा रहे हैं? So two-legged animals, तो दो पैरों पे चलने वाले जानवर, right? The humans, two-legged animal means no horns, no tail. दो पैरों पे चलने वाला जानवर मतलब कोई सींग नहीं और पूंछ नहीं. So human form, but like animal consciousness. लेकिन मनुष्य शरीर है लेकिन पशु की चेतना. So they cannot perceive their suffering condition. वो भी अपने दुखों को महसूस नहीं कर पाते. They think everything is cool, everything's fine. कुछ बहुत ही बढ़िया है. So if you're fortunate, you can feel sinful reaction. अगर आप भाग्यवान हैं तो पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं को आप महसूस कर पाएंगे. Because it's not like, okay, a few sinful reactions, I couldn't feel it, you know? ऐसा नहीं कि ये ऐसे पाप कर्म जो आप महसूस नहीं कर पाएंगे. No, it's a Himalayan mountains of sinful reaction. हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्म की प्रतिक्रिया. So you have a Himalayan mountain of sinful reaction and you don't feel any sinful reaction, you don't feel any suffering, any misery, any anxiety, everything's fine. Are you so callous? हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्मों के फल हैं और हमें उनको पाप कर्मों को कोई महसूस नहीं कर पा रहे हैं. क्या हम इतने जड़ हो चुके हैं? It's a callousness. तो ये बहुत जड़ हो चुके हैं. My Gurudev used to tell the story of the man, he has one boil on his buttock, you know? जैसे मेरे को बताते थे कि एक व्यक्ति है जिसके पीछे कोई फोड़ा हो चुका है. And a very painful one. और बहुत ही दर्दनाक फोड़ा हुआ And है. every day it was like growing and growing and growing, more and more painful, you और know? हर दिन बहुत बड़ा बड़ा होता जा रहा है और दर्द उसको देता जा रहा है. Right? But he's so callous guy. लेकिन वो ऐसे जड़ बुद्धि वाला है. Right? He's thinking one day it'll be so big it will give him some shade from the sun, you know? एक दिन इतना बड़ा होगा कि ये उसको तपती धूप से जो छांव देगा. This is callous, you know? Or the guy in the forest, he's in the forest fire, his head's on fire, his eyebrows are on fire, right? ये जो व्यक्ति जो है जंगल में आग लगी हो, उसके सर में आग लग चुकी है, बालों में, उसके जो है भौरों में भी आग लग चुकी है. Then he comes out of the forest fire, he's on fire, and you say, hey man, are you alright? तो वो जंगल की आग से बाहर निकला, उसके सर में आग लगी, भौरे में आग लगी, और कैसे हैं आप? I'm fine. मैं ठीक हूँ. Yeah, everything's cool. You're on fire. Yeah, everything's cool. आग में कह रहे सब बहुत बढ़िया है. That's callous, you know? But if you can feel it, wow, I'm in a fire. तो आप अगर महसूस कर पा रहे हैं कि मैं आग में हूँ This is intolerable. और ये सहन करने लायक नहीं I है. cannot go one more second living like that. इस तरह से और एक सेकंड में जीवन नहीं चला सकता. Then we'll surrender to Krishna. तब हम कृष्ण को शरणागत करेंगे. Because it's only relief. क्योंकि यही एकमात्र It's राहत only है, solution. यही एकमात्र समाधान है. Yes, sir? Let's see what he has today for me. What special mercy. देखते हैं आज क्या विशेष कृपा है आपके पास हमारे लिए. I Like last yesterday, I had talked with Sanatan Prabhu. Which one? Sanatan Prabhu. Sanatan. Yes. So he. Sanatan means eternal. Yes. पिछले बार मेरे सनातन से बात हुई, मुझे बताया सनातन का मतलब नित्य. So he taught me one thing. Like the cause of suffering is, I think we are not looking into the root cause of suffering. Like if we are solving a math equation and the first step is wrong, and we are again expecting that the answer will be right. But we are not looking even the beginning and the root cause of every problem, the suffering, and we are blaming Maya, and we are not blaming our own self or our own karma. So we're not taking responsibility, Yes. right? Yeah. Why we aren't responsible for our own thing, whatever is happening in our life? He taught you that? How to take So this is my responsibility? question. He gave an example. So this is the thing. So what is the question? Like, why aren't we taking the responsibility for our own suffering? And Why should you take? Why are we not able to take responsibility for our own situation? Because we're feeling ourselves a victim. And we are blaming Maya for all this thing. We're feeling ourselves a victim. We're unfairly being mistreated, and we don't think we deserve it.
तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि हमें जो पाप कर्म की प्रतिक्रिया मिल रही है हम उसके जड़ में जाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमने क्या गलत किया था और हम माया पे दोष डालने का प्रयास करते हैं और अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो ये मुझे कल बात समझ में आया। तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें गलत तरीके से हमें प्रताड़ना दी जा रही है। Just like we were saying, you know, I'm trying to be a nice person. जैसे हम बता रहे थे कि मैं अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा हूँ, kind, nice person. दयालु, एक अच्छा व्यक्ति। But why am I suffering so much? लेकिन क्यों मैं इतने दुख में? It doesn't seem to make sense. इसका कोई मतलब नहीं निकलता। So then we think, oh, this is unfair. तब हम सोचते हैं ये गलत हो रहा है। So if we're feeling like a victim and it's unfair, that means it's somebody else's fault, हम right? सोचते हैं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और ये गलत है, इसका मतलब कोई और इसके जिम्मेदार है। But if we understand the law of karma, the science of karma, we'll understand, no, whatever suffering or anxiety happening, I'm just getting a reaction from my previous, you know, bad decisions. तो अगर आप कर्म के नियम को समझ पाएंगे कि कैसे आपको इन कर्मों की पाप कर्म की प्रतिक्रिया मिल रही है, तब आप समझ पाएंगे कि मुझे अपने पूर्व गलत निर्णयों का परिणाम पाप कर्म के फल के रूप में, दंड के रूप में मिल रहा है। Even in this life, if we make some passionate, you know, not well thought out decision, and then we end up getting in suffering condition, then we think, oh my God, why did I do like this? How could I just be so stupid, you know? इस जीवन में कई बार हम बहुत कुछ ऐसे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और बाद में हमें उसको दंड भुगतना पड़ता है। कहते हैं कैसे मैं ऐसा मूर्ख हो गया, मैंने ऐसा फैसला लिया अपनी जिंदगी में। I didn't think through the whole thing, you know? सभी चीजों को सोचा नहीं, सभी चीज के बारे में। Now I'm getting some reaction. अब मुझे उसका फल मिल रहा है। So then we have to take responsibility for that. तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। So as soon as there's some type of suffering and misery, anxiety, that's sinful reaction. जैसे किसी तरह का दुख, कष्ट हमें मिलता है, हमें समझना चाहिए पाप कर्म का प्रतिक्रिया है। So we created that for ourselves. तो हमने खुद के लिए बनाया है। So now we cannot blame anybody else for that. अब हम किसी और के ऊपर दोष नहीं डाल सकते इसके लिए। Everyone is just acting in such a way to deliver that particular type of suffering to us. तो सभी लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का विशेष तरह का दुख हमें देने के लिए। Krishna is using them. Maya is using them. माया उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। That's why it's Adi Bodhika, means other living entities causing you suffering and anxiety. कहते हैं आदि भौतिका, दूसरे जीव आपको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। That's a type of misery. ये एक तरह का कष्ट है। Or your body is sick, your mind is disturbed, the Adhyatmika, that's also type of misery. ये आपका शरीर बीमार है, आपका मन परेशान है, ये आपकी आध्यात्मिक ये भी एक तरह का कष्ट Or है। Adi Daivaka, या आदि दैविक। so the environment, the cyclones and tsunamis and wars, all of this big stuff going on, that everyone's suffering. सुनामी, तूफान, युद्ध, ये सब प्राकृतिक चीजें हो रही, ये भी एक तरह का दुख है, कष्ट है जो हमारे ऊपर आ रहा है। So Krishna said this world is a prison house. तो कृष्ण बताते हैं कि ये जगत एक कारागार है। It's not fit place for gentlemen and ladies. ये एक सभ्य महिला और पुरुष के रहने के लिए जगह नहीं है। Because in this world they're not following a Vedic culture, Vedic principle. क्योंकि इस जगत में वो वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता का पालन नहीं कर रहे हैं। In ignorance, we're committing all sinful activities, knowingly, unknowingly. और अज्ञान में हम पाप कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने में। So then we have to be punished, we have to suffer. तो हमें दंड भोगना होगा, दुख भोगना होगा। And we cannot say, well, I wasn't aware of it. और हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे I इसके didn't बारे know में that was against the law. जानकारी नहीं थी, ये कानून के खिलाफ है। Right? So if you're driving in some country, you don't know the traffic laws, and you break that law, they'll give you a ticket. तो अगर आप किसी देश में गाड़ी चला रहे हैं और यातायात के नियमों को आप नहीं जानते और नियमों को आप तोड़ते हैं तो आपको एक दंड भुगतना पड़ेगा। You cannot use ignorance as an excuse. तो आप अपने अज्ञान को बहाना नहीं बना सकते। Well, I didn't know that was against the law. वो मुझे पता नहीं था ये कानून के खिलाफ है। So you'll still be punished. तभी भी आपको दंड मिलेगा। But if you're knowingly breaking the law, then the punishment is more heavy. लेकिन अगर आप जानबूझकर कानून को तोड़ रहे हैं तो दंड ज़्यादा भारी है। When I first came to India, there was one liquor store near the temple in the Bhubaneswar. जब मैं पहली बार भारत आया था तो मंदिर के नज़दीक एक शराब की दुकान थी। Now there's every corner there's some liquor store. अभी हर एक कोने में जो है शराब की दुकान है। But at that time there was one liquor store. लेकिन उस समय हम एक के बाद एक शराब This की is दुकान थी। early 1992.
ये जो है शुरुआती 1992 के समय की बात है। And then I saw all of these people were like hiding behind the trees. मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। And then I asked, why are they all just hiding in the corner in the darkness behind the tree? मैंने पूछा ये लोग कोने में या अंधेरे में पेड़ के पीछे जाके क्यों छुपे हुए हैं? And he said because they feel shame to go into the liquor store. उन्होंने बताया क्योंकि उनको शर्म आती है शराब की दुकान में जाने से। Because they know this is greatly sinful activity. उनको पता है ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है। So naturally they feel some shame. इसलिए उनको स्वाभाविक रूप से कुछ शर्म आती है। Now it's all shamelessness, isn't अभी it? जो है बेशर्मी हो चुकी है। It's all the degradation of consciousness and civilization चेतना का पतन हो चुका है, सभ्यता का पतन हो चुका है। due to this, Kali Yuga. इस कलयुग के कारण। Just as an example. ये उदाहरण। So in India, especially, you're supposed to know. तो भारत में आपको जानना चाहिए ये सब। Right? Other countries, we don't know all these things are sinful activity. दूसरे देशों में पता ही नहीं है कि ये सब पाप कर रहे हैं। We're thinking it's normal. हमें लगता था ये बहुत सामान्य बातें हैं। Even they're giving like a beer to the baby, यहाँ तक कि जो है वो बियर जो है बच्चे को भी देते हैं। They think it's funny. तो लगता है ये बहुत अच्छा है, मजाकिया है। But Vedic culture, you're supposed to know this is completely unacceptable. लेकिन वैदिक संस्कृति के आधार पे ये हमें जानना चाहिए कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। So if knowingly you do, then your reaction is more heavy. तो जानबूझ के जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा भारी दंड मिलेगा। Because we're supposed to know. क्योंकि हमें जानना चाहिए था। Gurudev, one more thing. You said that when the snake is angry, sometimes it bites himself. Snake. It bites himself. Yeah, I think I heard something like that. मुझे याद मैंने ऐसा नहीं सुना था। There's a video. So, They don't even know it's like their own tail, उनको पता ही नहीं चलता था खुद की इनकी पूंछ है। So, what is the reason that they are biting or self-destructing themselves? Is it because of anger? What is it? Is it because of anger or their nature? Why are they biting themselves? That's what they do. So what if the person is having this kind of characteristic? Like a snake biting themselves, Yes. then definitely avoid them. तो जैसे कोई सांप होता है वो खुद को प्रभु सवाल पूछ रहा है, सांप खुद को काट रहा होता है अपने गुस्से से अपने देश से, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमें उनके साथ कैसा करना चाहिए? तो गुरुदेव बता रहे हैं बेहतर होगा उनसे आप बच कर रहे हैं। There's one saying in English, if the enemy is destroying themselves, then don't stop them. तो अंग्रेजी में कहावत है, अगर शत्रु खुद को ही विनाश कर रहा है तो उनको रोकिए मत। So if someone's in the process of destroying themselves, just don't get in the way, अगर कोई खुद के विनाश करने की प्रक्रिया में है तो आप उसके रास्ते में मत They're आइए। doing a pretty good job, वो अच्छा काम कर रहे हैं, Then you don't have to do anything. तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। But Prahlad or a very advanced devotee, they may try to preach to a very envious person. लेकिन प्रहलाद या बहुत उन्नत भक्त ऐसे व्यक्ति को भी प्रचार करने का प्रयास करते हैं। You see, Prahlad's trying to preach to such a huge demon as his father, प्रहलाद ऐसे बड़े असुर अपने पिता को हिरण्यकशिपु को प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं and he's not at all affected और उनको कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है because he's a very powerful personality. क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। But if we're not so powerful personality, लेकिन अगर हम ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हैं then only, we can't help them, तो हम ना तो उनकी मदद कर सकते हैं, but they're quite capable of hurting you. लेकिन वो बहुत ही योग्य है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। So it's better just to avoid them तो बेहतर होगा उनसे बचने as का much as possible. जितना ज़्यादा संभव हो सके। It's asat sangha. ये असत संग है। Without giving up asat sangha, we cannot really advance. असत संग को त्याग के बिना हम असल में प्रगति नहीं कर This सकते। is what's holding us back. ये हमें पीछे खींच कर रखा है। Shortage of satsanga and too much asatsanga. सत्संग की कमी और बहुत ज़्यादा असत्संग। Satsanga, then you're discussing these topics. सत्संग में इन विषय के ऊपर चर्चा होती है। We don't associate with devotees and with discussing all of the topics. हम भक्तों के साथ संग नहीं करते हैं, वो दूसरे विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। All related to body, bodily relations, शरीर के संबंधों के बारे में, name, fame, नाम, प्रतिष्ठा, money. पैसा। It's all materialistic. ये सब भौतिक है। We came here because we were fed up with materialism. हम यहाँ आए क्योंकि हम इस भौतिकतावाद से थक चुके थे।
We came here for a spiritual purpose. हम यहाँ आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए आए We didn't come here to try to make rupees, you know, हम यहाँ रुपए कमाने के लिए नहीं आए with all due respect. पूरे सम्मान से मैं कहना चाहूँगा And we have to be prepared to even leave your own family and friends. और हम अपने खुद के परिवार और मित्रों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना If होगा they are envious, if they are not believe in God, if they are impediment, obstacle in your spiritual life, they should be rejected. अगर वो द्वेषी हैं भगवान के विरोध में हैं और आपको मदद नहीं कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने में आध्यात्मिक जीवन में तो उनको आपको त्याग करना चाहिए If we're serious, अगर हम गंभीर हैं if you want to save your soul, अगर अपने आत्मा को बचाना चाहते हैं if you want to advance in spiritual अगर life, आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं then this thing has to be given up, तो इसको त्याग करने की जरूरत है has to be rejected. इसे त्याग करने की जरूरत है My father was like practically crying, why didn't you just become a Christian priest? और मेरे पिताजी तो बोल रहे थे कि क्यों मैं ईसाई पादरी नहीं बना You want to be spiritual, okay, but why you're leaving your religion? वो कह रहे थे ठीक है आप आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं लेकिन अपने धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं Why you're leaving your culture? अपने संस्कृति को क्यों त्याग कर रहे हैं I remember the first time I went to my father's house, I had a shaved head, wearing saffron with nice big tilak, you know. मुझे याद है पहले मैं जब पिता के घर पे गया आध्यात्मिक जीवन अभ्यास शुरू करने के बाद मैं सर मुड़ाया हुआ था बहुत बड़ी सी तिलक And I had और like गेरुआ वस्त्र saffron पहन robes, you know. और मैं गेरुआ वस्त्र पहन कर आया था I come floating in there, you know. और मैं उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा And my sister saw me, you know. और मेरी बहन ने देखा And मुझे the first thing she said is, hey brother, what is with the war paint? She was calling it war paint. और मेरी बहन ने कहा भाई ये जो युद्ध में जाने से पहले जो चेहरे पे चिन्ह लगाते हैं वो आपने क्यों लगाए हुए हैं Because only we understood, like in Africa, so they're going to war, they put on some paint or something, right? She said, hey, why are you wearing war paint, I thought you were practicing spiritual life, जब कोई युद्ध में जाता है जंग में अफ्रीका में तो इस तरह का युद्ध से पहले अपने चेहरे पे कुछ पेंट लगाते हैं तो उनको ऐसा लगा कि युद्ध में आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करने गए इन्होंने वॉर पेंट क्यों लगाया है And then I go in to talk to my father, and he's just looking at me like, all right, और मैं पिताजी से बात करने गया वो मुझे ऐसे देख रहे थे ठीक है He's trying to be a little open-minded, वो अपने प्रयास कर रहे थे मैं खुला मन रखूं He's like, what is my son doing now, मेरा बेटा अब क्या कर रहा है What wild thing is my son doing now, कौन सा पागलपन कर रहा है मेरा बेटा So I'm sitting there and I'm telling him about the presiding deities on Vaikuntha planets. मैं वैकुंठ लोक के प्रमुख विग्रहों के बारे में बता रहा था Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं Of all the things you can say, like to your father, इतनी सारी चीजें जो आप बात कर सकते हैं अपने पिता Yeah, से there's Vaikuntha planets and this deity is there on the Vaikuntha planet. My father's like, are you all right? उनका एक वैकुंठ लोक है जहाँ पे ये प्रमुख विग्रह होते हैं मेरे पिताजी ने कहा तुम ठीक हो Because I must have just read it, so I thought it was like a fascinating. So I'm just telling him about the Vaikuntha planets and presiding deities and incarnations, and he's just like some simple Christian guy, तो मैंने उसको थोड़ी देर पहले किताब में पढ़ कर आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैकुंठ लोकों में अलग अलग कैसे विग्रह हैं और ये जो एक सरल एक क्रिश्चियन व्यक्ति थे Like Jesus said, try not to kill anybody. जीसस के निर्देश है किसी को हत्या करने का प्रयास मत करो Try not to steal anybody's wife today. किसी की पत्नी को चुराने का प्रयास मत करो It's like a basic principles, right? मतलब मूलभूत सिद्धांत देते हैं And I'm talking about presiding deities in Vaikuntha और planet. मैं वैकुंठ लोगों के प्रमुख विग्रहों के बारे में बात करने लगा And then he's listening. और वो सुन रहे And then after a while, he's like, son, can I give you some advice? उन्होंने कहा कुछ समय सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बेटे मैं तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ And I was like, of course, father. मैंने कहा लीजिए Now I read a couple of, Shastric book. I'm like all puffed up, I'm like, yes, father. What will you add to this conversation, और जब मैं कुछ शास्त्र की किताब पढ़कर आ चुका तो मैंने पिताजी से कहा ठीक है आप देखते हैं क्या आप इसमें अपना जोड़ सकते हैं And then he said, if you're going to speak about spiritual life, why don't you speak something that you truly realize what are you talking about? तो मेरे पिताजी ने कहा अगर आप आध्यात्मिक जीवन अभ्यास कर रहे हैं किसी को बताना चाहते हैं
तो आपने जो अनुभव किया, साक्षात्कार किया आध्यात्मिक जीवन में, जो असल है वो आप लोगों को बताइए। This would be probably more effective in your preaching, you वो know. आपके प्रचार में ज़्यादा प्रभाव करेगा। And it was like Krishna just speaking through my father, you और know, ये कृष्णा मेरे पिताजी के माध्यम से मुझे बोला, because he spoke the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। Just what you practically realize and what faith you have, just speak about that then. जो व्यवहारिक आपने साक्षात्कार किया है, जितनी आपकी श्रद्धा है, बस उतना ही बोलने का प्रयास कीजिए। Don't try to be more intelligent. ज़्यादा बुद्धिमान बनने का प्रयास मत कीजिए। Then you're just speculating and you're just on a false ego platform. It's all materialistic. तो आप मनोधर्म करेंगे, मिथ्या अहंकार के स्तर पे ये सब भौतिक है। It won't be very impressive or persuasive. तो ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा या लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाएगा। So father gave nice advice. तो पिताजी ने अच्छी सलाह दी। Does that help to understand something? क्या आपकी मदद हो पाई थोड़े अच्छे तरीके से समझ पाने के लिए? Yes, yes, Guru. Thank you. धन्यवाद। Any last thing before you all have to go eat something? Yeah. आखिरी चीज़, इससे पहले कि आपको जाके कुछ खाना हो। हरे कृष्ण। Hari Paul. गुरु महाराज श्री चरणे अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। उपस्थित भक्तमंडली श्री चरणे प्रणाम। तो आमी एक्चुअली ग्रामे थाकी माने जंगले थाकी, तो আমার বহুত প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কারণ আমার একটাই ভাষা জানা আছে, বাংলা ভাষা। তো আমার অনেক প্রশ্ন জাগে। ভগবান বলছেন কি, কর্মণাপি বদ্ধমম বদ্ধমম চ বিকর্মণ অকর্মণস্য বদ্ধমম গহনা কর্মণা গতি। তো কর্মের গতি নির্ধারণ করা সত্যি খুবই কঠিন। তো You see how he's talking with some strength, right? आप देख रहे हैं कैसे पूरी शक्ति से बात कर रहे हैं। তো আমি প্রভুপাদের শিক্ষা অনুসারে প্রভুপাদের শিক্ষাতে জানলাম যে কৃষ্ণ ভক্ত হচ্ছে বিষ্ণুর অধীন। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তাদের বিচার করবে ভগবান কৃষ্ণ, এরা যমরাজের বিচার করবে না। তো প্রভুপাদ বলছেন যে সাপ কিংবা বিছেকে যদি কোনো কৃষ্ণ ভক্ত তাদেরকে মেরে ফেলে তাহলে তার কি গতি হবে। মহাপ্রভু শিক্ষাতে জানছি কি, যে তৃণদপি শনিচল তররূপ সহিষ্ণু না অমানিন মানিদন কীর্তনীয় সদাহরি। তো অ্যাকচুয়ালি সাধুর স্বভাব এইটা হওয়া উচিত। আমার প্রভুপাদের শিক্ষাতে জানছি যে আমাদের কি, যে যদি কৃষ্ণ ভক্ত বা যে যদি কোনো সর্প বা কোনো বিছাকে যদি মেরে দেয় তাহলে তার কি গতি হবে। একটু আগে ক্লাসের আগে জানলাম কি, যে ওই যে সাপ এবং বিছার পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী তাকে সাপ এবং বিছা জন্ম পেতে হয়েছিল। তো সেই অনুসারে যদি কোনো কৃষ্ণ ভক্ত সাপ এবং বিছাকে মেরে ফেলে তাহলে কৃষ্ণ ভক্তের গতি কি হবে। গুরু মহারাজের কাছে এটাই প্রশ্ন, যে যদি কোনো কৃষ্ণ ভক্ত সাপ এবং বিছাকে বা যদি সাপ এবং বিছা অনুরূপ কোনো ব্যক্তিকে যদি দংশন করে বা মেরে দেয় তো সেই কৃষ্ণ ভক্তের গতিটা কি হবে। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। Hare Krishna. That was strong, right? बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न था। What are we learning? What are we learning today? So, Prabhu is asking that it's very difficult to understand the intricacies of karma. That's why we're explaining it to you. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कर्म के नियमों को समझ पाना बहुत ही कठिन है, तो गुरुदेव बता रहे हैं इसलिए हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। So, he's saying that you were explaining about snake and scorpions in the class. So, his main question is, if a devotee of Krishna, If what? if a devotee of Krishna, Yeah. because Krishna is giving protection to his devotee, Yeah. so his devotee is fully under the control of Krishna. So, if a devotee of Krishna kills snake or scorpion, then what happens to that snake and scorpion? And if a snake or a scorpion kills Krishna's devotee, then what happens to that? Well, we know what happens when the snake and scorpion is killed, right? तो सवाल पूछ रहे हैं कि वैष्णव हमेशा कृष्ण के अधीन में होते हैं, तो अगर वो किसी सांप या बिच्छू को मार डालते हैं या फिर वो बिच्छू या सांप
वैष्णव को मार डालते हैं तो फिर क्या गति होती है। तो गुरुदेव बता रहे हैं हमें ये पता चला इसके माध्यम से कि उस बिच्छू या सांप का को मारने पे क्या होता है। One of my misunderstanding, Mr. Eternal. क्या मैं गलत समझ रहा हूँ सनातन? Srila Gurudev is asking that if a devotee is, Krishna's devotee is killing the scorpion or a snake. If he's killing them? Yes. Yeah. So what is the result? What destination? What happens to? Do they get some reaction? Like the devotee of Krishna? Like what happens to them because of killing of that? No reaction. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं जब किसी ऐसे भगवान के भक्त कृष्ण के भक्त वैष्णव जब किसी सांप या बिच्छू या ऐसे व्यक्ति को मारते हैं सांप बिच्छू जैसे तो उनका क्या प्रतिक्रिया मिलती है? तो गुरुदेव बता रहे हैं उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। Maybe they get some biased credit. उनको कुछ पुण्य जरूर They देते helped humanity, right? क्योंकि उन्होंने मनुष्य के लिए परोपकार किया। It's like a bhakti. They helped the devotees. They didn't get bit by that snake. एक तरह की भक्ति है, उन्होंने बाकी लोगों की मदद की, वो सांप के द्वारा काटे नहीं So जाते। you protected the devotee. उन्होंने भक्तों की रक्षा की। And then you freed that snake from any reaction, sinful reaction. और उस सांप को मदद मिली और किसी तरह के पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं से बच सकेंगे। So it's all good. ये सभी अच्छा है। It's all positive. सब सकारात्मक है। Alright? ठीक है। He asked such a long, powerful question. I answered it so shortly. I feel like I should just keep saying something, you know. इन्होंने इतना लंबा शक्तिशाली सवाल पूछा, मुझे लगा मैंने इतना सरल उत्तर दिया छोटा सा, मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा बोलते रहना चाहिए। At least as long as his question, I should be answering it, you know. कम से कम जितना लंबा सवाल पूछा था उतना लंबा उत्तर देना चाहिए। But because the whole class was on this point, I thought we already mostly made this point. लेकिन ये पूरा क्लास ही इसी बात पे था तो मुझे लगता है कि हमने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। But my question is, why are you always so happy? लेकिन मेरा सवाल है हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? I want to put that in a bottle and sell it, you know. मैं इसको एक बोतल में डाल के बेचना चाहता हूँ। What is your secret? Why are you always so happy? आपका रहस्य क्या है? Everybody is dying to know this thing. सभी लोग मर रहे हैं उसको जानने के लिए। What do you attribute that to? कैसे आप उसको जाहिर करेंगे? Ask him. Why is he always so happy? पूछो ये हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? অ্যাকচুয়ালি আমার মানে এই যে ভগবত ভক্তির মানে নতুন নতুন কিছু মানে অজানাকে জানার এই যে প্রয়াসটা আমাকে সবসময় মানে আন্দোলিত করে। মানে ভগবানের যে সমস্ত কথা আছে সব তো আমি উপলব্ধি করতে পারিনি এই মুহূর্তে। তো অজানা কথা যখন আমি জানতে পারি বা জানার আমার ইচ্ছা লাগে তখন আমার মধ্যে একটা মানে আনন্দ ভাব লাগে। He's saying that I am new in Krishna consciousness and there's so many things to learn. So when I'm trying to learn something new and I know that I have many more things to learn, so that makes me very happy. अच्छा। तो बता रहे हैं कि क्योंकि मैं नया हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं हासिल की कृष्ण भक्ति में और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए अनजानी हैं। तो जब ये नई चीज़ें कृष्ण कथा के माध्यम से मुझे जानने का मौका मिलता है, ये नई चीज़ों को सीख के मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है। That's why he's happy. इसीलिए खुश है। Remember when we first joined? आपको याद है जब हम पहली बार जुड़े थे? And we were enthusiastic and happy, learning new things. और हम लोग उत्साह में थे, खुश थे नई चीज़ों को सीखकर। Remember those good old days? वो अच्छे पुराने दिन याद हैं? So what happened? फिर क्या हुआ? What happened to our happiness? हमारे सुख का क्या हुआ? We became advanced. हम थोड़े उन्नत हो गए। We advanced ourselves right out of our happiness. हम इतने उन्नत हो गए हम सुख से बाहर निकल गए। Because it's very simple. क्योंकि ये बहुत सरल है। So because he's simple, then the Krishna, he feels reciprocation from Krishna. तो वो बहुत सरल है तो कृष्ण से कोई प्रतिफल मिलेगा। That's why his soul is happy. इसीलिए उनकी आत्मा खुश है। So why our soul is not happy? क्यों हमारी आत्मा खुश नहीं? Because we're not being simple. क्योंकि हम सरल नहीं हो रहे and we're not getting reciprocation. और हम प्रतिफल नहीं पा रहे। That's the root cause. ये है जड़ कारण। So Vaishnava means simple. वैष्णव का मतलब होता है सरल।
because he's simple-hearted, then easily he can get the spiritual reciprocation. तो सरल हृदय वाले हैं तो बहुत ही जल्द उनको आध्यात्मिक प्रतिफल मिलेगा. Because we're so overly crooked and sophisticated, हम जरूरत से ज़्यादा कपटी और जटिल हो चुके हैं. and we think we know everything already. और हम सोचते हैं हम पहले सब कुछ जान चुके हैं. There's really nothing new to learn. और कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है मेरे पास. So you contrast those two type of mentality. तो इन दो मानसिकता को आप तुलना कीजिए. So it's more simple, more innocent. तो ये ज़्यादा सरल और ज़्यादा नादान है. Otherwise, with so much pride and arrogance, conceited nature, जितना it's all demoniac quality. दम्भ, अकड़, दर्प, ये सब असुरों के गुण हैं. If you're simple, you're not puffed up, you're not arrogant or conceited, right? Then not so much demoniac quality. अगर आप उतने सरल हैं और आपके अंदर ऐसे असुरों के गुण नहीं है, अकड़ नहीं है, दर्प नहीं है, Then it's easier to perceive spiritual enlightenment and reciprocation. तो आध्यात्मिक जागृति पाना या आध्यात्मिक प्रतिफल पाना बहुत ही आसान होता है. It's very nice to see. I sense that anytime I saw him, he was always happy. ये बहुत अच्छी बात है. जब भी मैं इनको देखता हूँ खुश रहते हैं. He's bright, effulgent, happy. चमकदार, खुश रहते हैं. That means he's doing something right. इसका मतलब वो कुछ सही कर रहे हैं. Prabhupada says like that. You should Prabhupada see ने ऐसा कहा है. by whatever you're doing, are you becoming in a nice consciousness and are you becoming happy? और अगर जो भी आप कर रहे हैं उसको देखिए कि उससे आप अच्छी चेतना में आ रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं या नहीं. If not, it means we're misunderstanding something. अगर हम नहीं हो पा रहे इसका मतलब कुछ गलत फहमी है. Or we're not following properly. या हम सही तरीके से कुछ पालन नहीं कर रहे. So we're not getting the proper reciprocation. हमें सही प्रतिफल नहीं मिल रहा. No higher taste. कोई ऊंचा स्वाद नहीं मिल रहा. Then we can't get rid of the lower taste. तो आप नीचे के स्वाद को त्याग नहीं कर सकते. So it's a nice reminder, right? It's supposed to be joyfully performed. तो ये बहुत अच्छा हमें स्मरण दिलाने के लिए था कि हम. Right? Even he's asking questions, trying to learn something, but he's joyfully trying to learn something. तो वो कुछ सवाल पूछ रहे, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन पूरे आनंद से उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं. I remember when I first read the Srimad Bhagavatam. मुझे याद है पहली बार जब श्रीमद् भागवतम मैंने पढ़ा. I was reading it all through the whole night. I couldn't even go to sleep. मैं पूरी रात उसको पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैं सो भी नहीं पाया. Because I was thinking, I've been waiting, I felt like for lifetimes to get that specific information. मुझे ऐसा अनुभव लग रहा था मैं पूरे जीवन इंतजार कर रहा था इस जानकारी को पाने के लिए. So it's really like food for the soul. तो मेरी आत्मा को भोजन मिला. And you can see what is the difference of reading that, getting that mercy, and reading so-called, academic or materialistic knowledge. और आप तुलना कर सकते हैं कैसा उसको पढ़ने के बाद वो जो कृपा मिली और भौतिक किताबों को पढ़ने के बाद जो Very sat and very dry. एक असर और पूरा सूखा था. No spiritual taste. कोई आध्यात्मिक स्वाद नहीं था. So it's nice to see that. No? बहुत ही अच्छा है ये देखने. If we see somebody getting mercy, somebody's happy, somebody's simple, we should think, I wish I was like that. अगर हम देखते हैं कि जो कृपा मिल रही है, कोई सरल हो रहा है, तो प्रतिफल मिल रहा है, तो हमें ये कहना चाहिए काश मैं भी ऐसा हो पाता, काश मैं भी उनकी तरह हो पाता. We're not envious. We say, I wish I could also get mercy. मैं द्वेष नहीं करना चाहिए, काश मैं भी उनकी तरह खुश हो पाता. I should be more simple. मुझे और सरल होना चाहिए. Then maybe I'll be more happy. तो उसे तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा. Right? Are you happy? क्या आप खुश हैं? Is this your definition of happiness? क्या आपके सुख की परिभाषा है? You're satisfied with that level of happiness? इस स्तर के सुख से आप संतुष्ट हैं? You want a little more? आप ज़्यादा पाना चाहते हैं? Associate with that devotee. इस भक्त के साथ संग कीजिए. Let him share his happiness with you. आप उनका सुख आपके साथ बांटने दीजिए. If your jnana makes you hard, like stone. अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगे. If you become really bhakta, real devotee, then you'll automatically understand everything. अगर आप भक्त बनेंगे, असल भक्त तो अपने आप ही सारी चीजें समझ By जाएंगे. mercy of Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की कृपा It से. will not be hard like a stone. लेकिन हम पत्थर की तरह कठोर नहीं रहेंगे. That's the difference. ये अंतर है. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Anybody else? Last thing? Everybody good? सभी ठीक है? Yes? Did you solve your health problem? आपके स्वास्थ्य की समस्या को आपने ठीक किया? You're in the process? आप प्रक्रिया में हैं. Devaki, what's the latest? The latest is we check your X-ray, everything is alright. Only like this, some mucus is there,
we will take something to get it out. Anartha nivritti. कह रहे कुछ Get rid of the bad stuff. ठीक है, कुछ ऊपर जमाना गुरुदेव बता रहे अनर्थ निवृत्ति, बुरी चीजों को बाहर निकालना है, Unwanted stuff. अनर्थ को बाहर निकालना है। So, फिर I have one misunderstanding. Like, just one? просто मेरे माता जी मेरी गलत फहमी है, बस एक ही We're है, making progress. तो प्रगति हो रही है, Only one. बस एक ही बचा है। That's good. in animal world, like everybody act on karma law, everybody biting each other based on previous like karma, previous sinful activity, and Shukadev was saying about snakes and scorpions that they biting different creatures based on their enviousness and anger. So That's the nature of the body that they got. जिस तरह का उनका शरीर प्राप्त हुआ है सांप और बिच्छू का, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो लोगों को काटते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। So whatever body you have, it's going to act in a particular way. तो जिस तरह का उनको शरीर प्राप्त हुआ है वो उसी तरीके का स्वभाव से प्रतिक्रिया देता है। And whatever that body, mind is acting, whatever experience you have, that is some lesson is to be learned there. तो जिस तरीके का शरीर मन प्राप्त है, जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। Especially in human form of विशेष life, करके मनुष्य के जीवन में, where we can learn the lesson. जहाँ हम पाठ सीख सकते हैं। So the body, the mind is like a machine. तो ये शरीर और मन एक तरह का मशीन है। So what kind of machine did we get? तो किस तरह का मशीन हमें प्राप्त हुआ है? Is it a BMW? क्या ये BMW है? Or is it a Lada? या फिर ये एक लाता है? She has Lada, right? She's born with a Lada, she wants BMW. उनका जन्म हुआ है लाता के साथ और वो चाहती है BMW। So everybody has a particular, way that it's going to act, think and act. तो सभी के पास एक विशेष तरह की ये मशीन प्राप्त है जो विशेष तरीके से प्रतिक्रिया देता है। So how that body is thinking and acting will lead us into certain decisions and activities. तो जिस तरीके का शरीर ये और मन काम करता है उसी तरीके से उसके आधार पे हम And then we'll निर्णय get लेते the हैं reactions from those thoughts and activities, और उस तरह के विचारों और कर्मों से हमें वैसा प्रतिक्रिया भी मिलेगा, good or bad, अच्छा या बुरा, pious or impious, पुण्य या पाप, depending on what type of body you got. निर्भर करता है किस तरह का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। That's why it says if you've got Indian body and you're born in India and the Vedic culture, you have the best opportunity. इसलिए बताया जाता है अगर आपको भारत में शरीर प्राप्त हुआ है वैदिक संस्कृति में तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है। But if you don't use that opportunity, that birth, that body, that intelligence for this purpose, then you had the best opportunity and then you lost it, so you become the most, instead of the most fortunate, most unfortunate. तो अगर आपको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसे जगह पे जन्म मिला है, ऐसी पृथ्वी मिली है, ऐसा शरीर मिला, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा भाग्यवान होने के बजाय आप सबसे बड़े दुर्भाग्य बनेंगे। Because you're supposed to know. क्योंकि आपको जानना चाहिए। From birth you're supposed to know. जन्म से ही आपको जानना चाहिए। We learned all this thing later on in our life. ये सब चीजें हमने अपने जीवन में बहुत बाद में देखा। Prahlad Maharaj says from the beginning of your life you practice. प्रहलाद महाराज बताते हैं जीवन की शुरुआत से ही हमें अभ्यास करना But we चाहिए। join later in our life. लेकिन हमने जीवन में बहुत देर So से it's much more complicated. और ज़्यादा जटिल हो चुका है। There's more conditioning, और ज़्यादा हमारे more ignorance, अज्ञान आ चुका है, more bad habits, और बुरी आदतें, and more accumulation of all of this anartha. सारे अनर्थों का जमाव हो चुका है। So it's much more complicated. और ज़्यादा जटिल हो चुका है। But anyway, what to do? Still you have to do something. लेकिन क्या करें, हमें कुछ फिर भी इस पे कुछ To करना try to होगा get purified from all of these things. और इन सारी चीज़ों से अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास So करना we होगा। prayed to Lord Narasimha that he can help us to get purified of all of these demons, demoniac qualities that we have within ourselves. हम in our mind and consciousness. ऋषिदेव से प्रार्थना करते हैं हमारे मन हमारी चेतना में ये सारे असुर गुण हैं इनको शुद्ध कर सके।
So we can free the soul, the devotee of the soul within the body. ताकि वो इस शरीर के अंदर जो भक्त है आत्मा उसको मुक्त कर सके. That's our special prayer today. ये हमारी आज की विशेष प्रार्थना है. How do we go from being demon to becoming really devotee? कैसे हम असुर से असल भक्त बन सकते हैं? It's better to be devotee भक्त होना ज़्यादा बेहतर than a demon. असुर से. My Gurudev used to say very simply, just be good. मेरे गुरुदेव बहुत सरल तरीके से कहते हैं, अच्छे Don't be बनो. like a bad. Be good. बुरे मत बनो, अच्छे Be बनो. devotee. भक्त बनो. So he has so much shastric knowledge. He's saying just be good. उनको बस इतना शास्त्र का ज्ञान है, वो कह रहे हैं बस अच्छे बनो. It's a simple presentation, isn't बहुत it? ही सरल प्रस्तुति है, ऐसा नहीं. Everybody, thank you very much for your kind बहुत attention and coming and joining us on this special day. इस विशेष दिन में हमारे साथ जुड़ के अपना ध्यान लगाने के लिए. I hope you get all the mercy and protection from the Lord in your bhakti devotional practice. बहुत कृपा मिलेगी, उससे आश्रय मिलेगा, रक्षण मिलेगा, ताकि आप भक्ति में And अभ्यास that you करते रह can सकें. avoid this envious asatsanga as much as possible. और ये वैसी असत्संग को जितना ज़्यादा आप उससे बच के रह And to सकें. be more peaceful, happy in execution of your seva. और ताकि आप ज़्यादा खुश रह सकें, शांत रह सकें अपनी सेवा करते समय. Shri Gauritai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Guru Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Srila Veda Bhakta Vrinda ki, Sringadev Bhagavan ki, Bhakta Prahlad Maharaj ki, Gaura Premanande, Mahaprasad ki, Hare Krishna. Thank you everybody. धन्यवाद सभी का. Now we finally solved this issue with the scorpion and the snake. अब अंत में हमने ये बिच्छू और I सांप can't के even sleep at night कहानी को because सुना of this conversation. लिया. इस चर्चा के कारण मैं रात को सो भी नहीं पा रहा. Thank you everybody. Have a nice prasad. अच्छा प्रसाद दीजिएगा. Hare Krishna. All right, everybody's good? सभी ठीक है? Everybody's good? Everyone's nice? Hey, I'm gonna go because you brought your happiness to us. You made us happy. এটা আমাদেরকে খুশ করে দিয়েছে. Hare Krishna. Hare Bol. His hair compared to Amber's hair. Amber used to have that hair. শিল গুরুদেব কি नमस्कार.